Okay, today we are going to start with the most important chapter of accountancy. If you get a grip of this chapter, you can rule accounts throughout your life. I'm not saying about 11th standard. This is the base of accountancy. ये चैप्टर अगर अच्छे से आपको आ गया तो 11, 12 कल को आप सीए करो, एमबीए करो. इवन आज की तारीख में मुझे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी होती है तो आई गो टू दिस रूट ऑफ द चैप्टर. चैप्टर नेम इज जर्नल एंट्री. Journal entry is a primary book of entry. And primary book of entry means the transaction, the book in which transaction is recorded for the very first time. मतलब बिजनेस में कुछ भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सबसे पहली बार किसी बुक्स में लिखा जाता है, उसका नाम क्या होता है? जर्नल एंट्री होता है. सो किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है, क्या रिकॉर्ड होता है, वो सारा इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे. सो सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे सीखने से बाय लर्निंग टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. इस सेशन के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं एंड हाउ टू आइडेंटिफाई दिस टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. फाइन. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन. इट कम्स अप हियर. ओके, here we go. So now if I see, we are on the chapter journal entries. General नहीं है, journal entries है. Then types of accounts. So basically there are three types of account. तीन तरह के अकाउंट होते हैं. सबसे पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट. So what I mean by personal account, तीन तरह के, जितने मतलब दुनिया में जितने भी अकाउंट्स है, अकाउंट्स मतलब अलग अलग टाइप ऑफ जिसको पार्ट कर सकता हूँ. पार्ट ऑफ अकाउंट्स इज टर्म्स एज अ अकाउंट. सो पर्सनल अकाउंट है. सो पर्सनल अकाउंट की डेफिनेशन है ऑल इंडिविजुअल, बिजनेस, स्कूल, कॉलेज, एसोसिएशन नेम्स आर पर्सनल अकाउंट. इन शॉर्ट किसी का भी नाम आता है, स्कूल, कॉलेज, एसोसिएशन, कोई क्लब है कि बैंक है, किसी का भी नाम आता है तो कौन सा अकाउंट हो जाता है? पर्सनल अकाउंट हो जाता है. इसके अगर मैं कुछ एग्जांपल दूं तो पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल नवीन अकाउंट. नवीन अकाउंट इट्स नेम ऑफ अ पर्सन, नाम है, पर्सनल अकाउंट हो गया. डीपीएस स्कूल अकाउंट, इट्स अ नेम ऑफ अ स्कूल, so again it's a personal. Third, ABC enterprise account, again it's a name of a company. So individual का नाम है, स्कूल का नाम है, कंपनी का नाम है, क्लब का नाम है, सोसाइटी का नाम है, आपकी सोसाइटी का नाम है. सपोज मेक सर्वन हाउसिंग सोसाइटी, इट्स अ सोसाइटी नेम. नाम आया तो पर्सनल अकाउंट हो गया. सो कैन यू आइडेंटिफाई पर्सनल अकाउंट? क्लियर? नेम मींस पर्सनल अकाउंट. सेकंड टाइप ऑफ अकाउंट इज रियल अकाउंट. सो रियल अकाउंट की डेफिनेशन है ऑल एसेट्स अकाउंट्स आर रियल अकाउंट, और डिफरेंट वे से all cash and cash convertible accounts are real. Assets account समझ नहीं आता है. All assets account real. Asset मतलब क्या? ऐसी कोई भी चीज which is either cash or which can be converted into cash are real account. ठीक है? So asset account जो भी हो real account है, उसको मैं कैसे डिफाइन करता हूँ? या तो कैश है या जिसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं. So we have taken some examples. For example, cash account. Cash itself is a real account. Building is a real account because it is cash convertible in future. कम पैसा मिलेगा, ज्यादा पैसा मिलेगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, उसकी बात नहीं चल रही है. But building can be converted into cash in the future. Third comes up is a machinery account. Machinery again can be converted into a lot of example. Chair account, bench account, my specs account, jewelry account. ऐसी कोई भी चीज जिसको मैं फ्यूचर में कैश में कन्वर्ट कर पाऊंगा वो मेरी क्या होती है? प्रॉपर्टी, एसेट. That all accounts are real. That's the second type of account. Personal name, real account, assets. Third is nominal. All, मैंने दो बार लिख दिया all. There's some technical misprint. All income and expense account are nominal account. जितने भी इनकम और एक्सपेंस का अकाउंट है वो सारे के सारे कौन से अकाउंट होते हैं? नॉमिनल अकाउंट होते हैं. फॉर एग्जांपल सैलरी. सैलरी कैन बी आइदर इनकम और एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. कमीशन कैन बी आइदर इनकम और एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. रेंट आइदर इनकम और एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट. आइदर वो इनकम है या एक्सपेंस है तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट है. ओके, सो पर्सनल, रियल, नॉमिनल. इन शॉर्ट इसको समझते हैं. इन शॉर्ट, सो पर्सनल अकाउंट जब भी होगा जब क्या आएगा? नाम आएगा. व्हेन इट्स अ नेम इट्स अ पर्सनल अकाउंट. व्हेन इट्स एसेट, कैश और कैश कन्वर्टिबल, इट्स अ रियल अकाउंट. एंड नॉमिनल इज आइदर इट्स एक्सपेंस, इनकम, या इसको बोलते हैं प्रॉफिट या गेन. एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट और गेन और लॉस, मतलब इन शॉर्ट एक्सपेंस, इनकम से रिलेटेड जो भी वो कौन से अकाउंट हो जाएंगे? नॉमिनल. फाइन. अब जब यहां तक का एक्सप्लेनेशन क्लियर करता हूं तो सम स्टूडेंट कम्स अप विद अ क्वेरी
सो सैलरी में भी पैसा जा रहा है, बिल्डिंग में भी मेरी जेब से पैसा जा रहा है. सो नॉमिनल और रियल के बीच में कंफ्यूजन है. सो लेट्स क्लियर द डिफरेंस बिटवीन रियल एंड नॉमिनल अकाउंट. समझो, रियल अकाउंट में समथिंग कैश कन्वर्टेबल कम्स इन माय हैंड. रियल अकाउंट कब होता है? मैंने बिल्डिंग खरीदी, मशीन, मेरी जेब से पैसा गया. आई एम नॉट कंसिडर द कैश अकाउंट, बट कैश पे करके मुझे मिला क्या? बिल्डिंग, एसेट्स, पैक्स, ज्वेलरी, कुछ ना कुछ मिला ना मुझे, which is again future convertible to cash. It's a real account. जबकि नॉमिनल अकाउंट में क्या होता है? Nothing comes in my hand. मैंने सैलरी पे की, मेरे हाथ में कुछ आया जिसको मैं फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकता हूं? नहीं. मैंने कमीशन रिसीव किया, फ्यूचर में कोई यूज करो ऐसी कुछ चीज आई? नहीं. सो रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट में कई बार कंफ्यूजन कि दोनों में ही मेरी जेब से पैसा जा रहा है. मैंने सैलरी पे की वर्कर को, पैसा गया. मैंने बिल्डिंग खरीदी, पैसा गया. बट बिल्डिंग में मेरे हाथ पैसा गया और मेरे हाथ में कुछ आया. इट्स अ रियल अकाउंट. सैलरी में मेरे हाथ से पैसा गया लेकिन मेरे हाथ में आया कुछ भी नहीं, देन इट्स अ नॉमिनल अकाउंट. क्लियर है? सो इन दिस वीडियो वी आर ओनली क्लियर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स. सो बिफोर आई एंड दिस वीडियो यू शुड बी वेरी क्लियर रिगार्डिंग दिस थिंग. There are 3 kinds of account: personal, नाम; real, assets, cash and cash convertible; nominal, income and expense account. And last one thing, in real, something cash convertible comes in my hand. In nominal, nothing comes in my hand. Clear? Fine. We'll see in the next video the rules for debit and credit. Thank you.